हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इमेज प्रोसेसिंग के यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एकेटीयू 2019-20 में जो एग्जाम लेने वाला है वो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस का होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर यूनिट 3। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यार, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि इन वीनर फिल्टरिंग इट इज एज्यूम दैट नॉइस एंड इमेज आर अनकोरिलेटेड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनकोरिलेटेड। EBCT स्कैनर्स स्टैंड फॉर ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। PSF स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पॉइंटेड स्प्रेड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, फिल्टर दैट परफॉर्म्स अपोजिट टू बैंड रिजेक्टेड फिल्टर इज कॉल्ड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैंड पास फिल्टर। 5th, डिग्रेडेशन कैन बी एस्टिमेटेड बाय option number B, 3 ways. 6, the purpose of restoration is to gain option number B, original image. Question number 7, power spectra and noise of undegraded image must be known is a statement of option number C, Wiener filter. Question 8, contra harmonic mean filter produces option number C, restored image. 9th, Gaussian noise is referred to as D, normal noise. 10th, convolution in spatial domain is multiplication in option number A, frequency domain. Question number 11, linear functions possesses the property of option number D, both A and B. आपका आंसर है additivity and homogeneity, both. Question number 12, PDF in image processing is called probability density function. 13th, filter that replaces the pixel value with the medians of intensity levels is C, median filter. 14th, in geometric mean filters when alpha is equal to 1 then it works as inverse filter. 15th, one that is not the type of a mean filter is, iska answer option number D, sequence mean filter. 16th, a restoration cannot be done using a single projection. 17th, mean filters reduce noise using blurring. 18th, in geometric mean filters when alpha is equal to 0 then it works as parametric Wiener filter. 19th, to improve the speed of convergence algorithm is used is convergence algorithm कौन सी यूज होती है, न्यूटन रैप्सन वाली. 20, degraded images produced using degradation process and additive noise. 21, the inverse of image convolution is image deconvolution. 22, impulse is simulated by C, bright dot. 23, the approach to restoration is inverse filtering. 24, square of standard deviation is B, A, variance. CT stands for computed tomography. 26, SNR in noise stands for option number A, signal to noise ratio. 27, approach that incorporates both degradation function and statistical noise in restoration is called C, Wiener filtering. 28, band reject filters are used when the noise components are usually known, जिनके बारे में पता रहती है हमें. Spatial filtering is used in the presence of additive random noise. 30, order statics filters are filters whose responses are based on option number D, ranking. 31, images usually get corrupted during transmission. ठीक है. 32, minimum mean square error filtering is also called C, least square error filter. High frequency components are passed by C, high pass filter. 34, one that is not a type of noise is called C, black noise. 35, filter that replaces the pixel value with the minimum values of intensity levels is min filter, minimum filter. ठीक है. Salt and pepper noise also referred to as term spike noise. 37, constrained least squares filter does not imply best in optimum restoration. 38, salt and pepper noise can interchangeably be used with impulse. 39, Gaussian shape function has no zeros. 40, filter that replaces the pixel value with maximum values of intensity levels is A, maximum filter. 41, FFT stands for fast Fourier transform. 42, automatically determined filters provides inferior results as compared to manually determined filters. Frequencies in predefined neighborhood are rejected by notch filter. 44, degraded image is given in
spatial domain. 45. Filter that computes midpoint between minimum and maximum value is called, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिड पॉइंट फिल्टर. 46. Low frequency components are passed by a low pass filter. 47. Principal sources of noise arise during image acquisition. 48. Periodic noise arise from electrical inference. 49. Function having both properties of additive and homogeneity is called, option number D, superposition. 50. Fourier spectrum of noises are constant and usually called white noise. तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों ये था. वीडियो अच्छी लगी यार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. और यार वीडियो को लाइक करो यार और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. कीप रॉकिंग. बाय बाय.